say? Good evening. I think in the last lecture we had discussed. Can you hear me? Is my voice audible? Can you see the lecture properly? Okay, let's start. I hope you can hear me. In the last lecture that we conducted on geography, I think we had completed till atmosphere, and we had discussed the structure of atmosphere, composition of atmosphere, and characteristics of atmosphere. Okay, I think we have discussed these three things. In characteristics, I have already given you the definition for temperature, then pressure, and third is humidity. Okay, and if I correctly remember, we have already discussed temperature and pressure, and we are about to discuss humidity. Okay, I think I have also told you there are two types of humidity. First is called as absolute humidity, and second is called as relative humidity. Okay, to understand absolute and relative humidity, you need to know two more concepts. First concept is called as vapor carrying capacity of air. पहली concept है vapor carrying capacity of air, and second concept is dew point temperature. Okay, in this concept of humidity, we also need to know two more concepts. First is called as saturated air, and another is called as unsaturated air. Okay, saturated air and unsaturated air. In saturated air, now let us define all these concepts first, and then we can start learning about relative humidity. First is vapor carrying capacity of air. Vapor carrying capacity of air. Now let us define water vapor carrying capacity of air.
Okay, let me define this concept. Water vapor carrying capacity. The water vapor that can be carried by a given air column for a given temperature is called as water vapor carrying capacity. Remember, water vapor carrying capacity is dependent on temperature. As the temperature increases, water vapor carrying capacity also increases, and if temperature decreases, then water vapor carrying capacity is going to decrease. So there is direct correlation. कशामध्ये डायरेक्ट कोरिलेशन आहे? वॉटर वेपर carrying capacity and temperature. Okay, so water vapor carrying capacity and temperature, there is direct correlation. They are directly proportional to each other. Okay, so whenever temperature is going to increase, water vapor carrying capacity of given air column, same volume, that same air column is going to increase. Now let us define relative humidity. For relative humidity, there is a simple formula. First is actual water vapor in grams per unit volume upon water vapor carrying capacity at given temperature multiplied by 100. This is the formula for relative humidity. So remember, relative humidity is dependent on the temperature, actual mass of water vapor, and water vapor carrying capacity. So when I say that the actual water vapor is 20 grams per cubic meter and the water vapor carrying capacity of given air column is 40 grams per cubic meter, then relative humidity of that air column is going to be 20 divided by 40 multiplied by 100, which is equal to 50%. So air is 50% filled with water vapor and air is 50% empty. So there is more space for accommodation of water vapor. Okay, so water vapor can accommodate in this particular part. Okay, so this is about water vapor. Now please understand the concept of saturated air and unsaturated air. Whenever the humidity of relative humidity of air, whenever it is less than 100%, the air is called as unsaturated air. Remember,
What do you understand by the term? If the relative humidity of air is less than 100%, then this air column is called as unsaturated air. And whenever relative humidity of air becomes 100%, the air is called as saturated air. Okay, now let me define dew point temperature. Dew point temperature ची concept आहे ती एक्झॅक्टली काय आहे ती मला डिफाइन करू द्या. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे एक्झॅक्टली काय? Dew point temperature means an unsaturated air column becomes saturated at a particular temperature. So for one air column, relative humidity is 50% and its temperature is 23 degrees Celsius. Now when we start decreasing the temperature of this air column, relative humidity is going to increase. So if we take this air column to say 5 degrees Celsius, 5 degrees Celsius, the relative humidity of the same air column becomes 99%. And whenever temperature falls down below to 5 degree, for example, if this air column reaches to 4 degrees Celsius temperature, the relative humidity of this air column becomes 100%. Okay, and at this particular point of time, at this temperature, at this 4 degrees Celsius, the unsaturated air column becomes saturated, and this temperature is called as dew point temperature. So for this air column whose relative humidity is 50% at 23 degrees Celsius, dew point temperature is 4 degrees Celsius. And whenever you take the temperature of air below dew point temperature, another process takes place, and the process is called as condensation. Process चं नाव काय आहे? Condensation असं त्या process चं नाव आहे. Let me define condensation for you. Whenever an unsaturated air column is taken below its dew point temperature, the excess moisture gets converted into water droplets and ice crystals. Remember, whenever an unsaturated air column is taken below its dew point temperature, its relative humidity reaches to 100%. It cannot go beyond 100%. So what will happen if we take an air column below its dew point temperature? It will have an excess moisture. That excess moisture gets converted into water droplets and ice crystals, and this particular process is called as condensation. Okay, when these ice crystals and water droplets fall down the surface, it is called as precipitation. Remember, there are multiple processes involved in cloud formation and precipitation. So first process is going to be evaporation. सगळ्यात पहिली प्रोसेस कुठली असणार आहे? इव्हॅपोरेशन. इव्हॅपोरेशन नंतर असणार आहे कन्व्हेक्शनल करंट फॉर्मेशन. कन्व्हेक्शनल करंट फॉर्मेशन. तिसरी प्रोसेस असणार आहे ती म्हणजे unsaturated air becoming saturated. बरोबर आहे. चौथी स्टेप असणार आहे कंडेन्सेशन. ओके, आणि पाचवी स्टेप असणार आहे प्रेसिपिटेशन. ओके, सो इव्हॅपोरेशन, कन्व्हेक्शनल करंट फॉर्मेशन, कंडेन्सेशन, अशा ह्या वेगवेगळ्या स्टेप मधून साधारणपणे रेनफॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. आपल्याला इथे अजून एक महत्त्वाची गोष्ट बघायची आहे ती म्हणजे फॉर्म्स
or types of precipitation. Forms or types of precipitation. First form of precipitation is rainfall. Rainfall is of three types. First is convective rainfall. Second is orographic rainfall, and third is cyclonic rainfall. Okay, convective rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfall. Then second is snowfall. Second form of precipitation is snowfall. Okay, then third form of precipitation is dew. Then fourth is frost. Fifth is hail storm. So these are some of the forms of precipitation that we can observe. Okay, so if you have any doubt regarding this, you can ask me question on the live chat section. I have given you all the types of precipitation. Now we have already discussed the process of cloud formation. Okay, here I'll give you types of clouds just for clarity. Cloud formation takes place post condensation. Okay, and then there is precipitation. Now there are multiple types of clouds. First is called as low clouds. Second is called as medium clouds, and fourth one is high clouds. I'll give you examples of these three. High clouds तीन example है: cirrus, cirrostratus and cirrocumulus. मीडियम क्लाउड्स के दो एग्जाम्पल्स है: अल्टो स्ट्रैटस एंड अल्टो क्यूम्यूलस. और लो क्लाउड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट है क्यूम्यूलस, स्ट्रैटस, निम्बस एंड क्यूम्यूलो निम्बस. ओके, ये है बहुत सारे हमारे क्लाउड्स के प्रकार. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्लाउड्स के इतने सारे प्रकार हम कर सकते हैं. ओके, so this is all about atmosphere. As you can already know, in atmosphere we have discussed all three concepts. First we have discussed temperature. Second, in temperature I have given you multiple concepts. I have given you division of earth on the basis of temperature. जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और फ्रिजिड जोन. उसके बाद में प्रेशर के ऊपर भी हमने अर्थ का क्लासिफिकेशन स्टडी किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर. हियर वी हैव डिस्कस्ड वेरियस जोन्स ऑफ विंड्स. इन प्रेशर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स. ओके, then we discussed recently, that is humidity.
I have already given you the concept of absolute humidity, then relative humidity, then I have given you the concept of condensation and dew point temperature. Okay, and then we have discussed the precipitation and forms of precipitation. Okay, now we are coming to the last part of atmosphere. एटमॉस्फेयर के लास्ट पार्ट में हम आ रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी क्लाइमेट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन व्हाट यू मीन बाय क्लाइमेट. इट इज द पैटर्न ऑफ वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन which has been given after studying the pattern of weather for almost 150 or more years. जब हम किसी लोकेशन का वेदर पूरे 50 से 150 सालों के लिए स्टडी करते हैं तो हमारे हाथ में जो एक पैटर्न आता है वो पैटर्न को जनरली हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. अभी यहाँ पे मैं आपको वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ और वो वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ. वो डायग्राम आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए. Okay, so take one diagram for climatic classification. Okay, this is the diagram that I am going to give you. 90 डिग्री नॉर्थ. अब इसी डायग्राम को आप फ्लिप साइड भी कर सकते हो, 0 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, देन 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ, उसके बाद में 66.5 डिग्रीज, सॉरी 60 डिग्रीज, 60 degrees north and south and 66.5 degrees north and south. Okay, so this is the diagram that will explain you all the concepts of weather. Now this is called as western margin of the continent. It is called as eastern margin of the continents, and this is called as continental margin of the continent. Okay, now let us discuss what kind of climatic divisions that we can found, or climatic divisions we can find on different sides of universe. First region is called as equatorial region किंवा याला इक्वेटोरियल क्लायमेट असे म्हटलं जातं. Then we have monsoonal climate. Then we have savanna, sorry, इसको हम yes सुदान type of climate बोलेंगे. Then we have hot tropical deserts. Then we have China type और Natal type. उसके बाद में बीच में है स्टेप्स. उसके बाद में है मेडिटेरेनियन. उसके बाद में है Laurentian. Then we have Siberian और आखिरी में है ब्रिटिश टाइप. फिर बाद में आता है तैगा और सबसे आखिरी में आता है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्लाइमेट्स दैट आर अवेलेबल
Okay, now our job is to explain all these types of climates in brief so that we can know what type of climates they are and how they are formed. Remember, you can use this diagram directly to understand world climatic classification. There is no need to go for any other model or any other way of studying climate for entire say earth. You can just use this diagram to study climate for northern hemisphere, then southern hemisphere. For southern hemisphere हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डायग्राम है उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है डायग्राम क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा। बाकी ईस्टर्न मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन जो है वो वैसे के वैसा रहेगा। और उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्लाइमेटिक टाइप्स है ये हमें कौन से क्लाइमेटिक टाइप्स कहाँ पाए जाते हैं। इनका जो लैटिट्यूडनल और कॉन्टिनेंटल लोकेशन है, ये लोकेशन आप ध्यान में रखो अच्छे से, बिकॉज दिस लोकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स। अभी कोई भी क्लाइमेटिक टाइप जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है वो सबसे पहली बात आप जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो टेम्परेचर, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर द गिवन रीजन। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है प्लांट एंड एनिमल्स, या फिर उसको आप नेचुरल वेजिटेशन एंड फ्लोरा एंड फाउना बोल सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन एंड फ्लोरा एंड फाउना, ओके। देन D, we need to know soils in this particular area. Fourth, we need to know human geographical aspect, what kind of humans live there, what profession they practice, how they generate their income. और सबसे आखिरी में हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा वो है यहाँ के इकोलॉजिकल इश्यूज। इकोलॉजिकल इश्यूज ये सब हम जब स्टडी करेंगे तो हमारे एक कोई भी जो क्लाइमेटिक टाइप है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर ये रीजन में 28 टू 32 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर कौन से भी कोल्डेस्ट मंथ में 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में प्रेसिपिटेशन देखिए, यहाँ पे 365 डेज एंटायर ईयर देयर इज प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज रफली अराउंड 650 टू 700 सेंटीमीटर्स। देन नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे है, उसको बोला जाता है हाइड्रोफाइटिक वेजिटेशन, ओके। और ये वेजिटेशन को और एक नाम दिया गया है, इनको बोला गया है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ओके। यहाँ पे जो ट्री स्पीसीज पाए जाते हैं उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। यहाँ पे जो सॉइल हमें मिलेगा वो स्केलेटल और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर ये सॉइल में ज्यादा रहेगा। द सॉइल इज गोइंग टू बी स्वाम्पी एंड मार्शी, ओके। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका के बीचों बीच से इक्वेटर गया हुआ है, तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। देन साउथ ईस्ट एशिया में ये क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हवाईयन आइलैंड्स के ऊपर, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ये द्वीप समूहों में आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और ये क्लाइमेट की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पे हर पूरे साल बारिश होती है। मतलब बारिश का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 365 डेज। और यहाँ पे एक पिक्यूलियर थिंग ऑकर होती है, एंड दैट पिक्यूलियर थिंग इज देयर इज रेनफॉल एवरी डे एट 4 o'clock। रफली 4 बजे यहाँ पे हर रोज आपको
मूसलाधार बारिश होने की एक इंस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी। ओके, सो दिस इज अबाउट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अभी आपको क्या करना है कि जैसे मैंने ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लिए आपको बताया वैसे ही आपको सभी क्लाइमेटिक टाइप्स के लिए ये पढ़ना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही मैं ले सकता हूँ। कल के लेक्चर में अपन बाकी के क्लाइमेटिक टाइप्स जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी का या फिर एटमॉस्फेयर का जो सेक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।